jobs, production, revenues to make Pakistan a progressive and a prosperous country in times to come. When these special economic zones were under consideration, and in 2016 and 17, 9 special economic zones were approved in one of the joint commission meeting in Beijing, 9 special economic zones, and then things changed, and the rest is history. It was discussed at that time, and it is equally relevant at this point in time, that in certain areas China has moved to a different level, high-tech, industrial projects, and moving away from labor-intensive, projects. Now, because labor is very expensive in China now, and in other factors, we are still, a country where we have comparatively cheaper, skilled and semi-skilled labor, and with cooperation with Chinese companies in these, industrial zones, we were expecting, and we hope this is still possible, that we attract Chinese machinery in these zones and other areas where Chinese technology and Pakistani and Chinese investments can make wonderful win-win situation, export them and have profits, and improve Pakistan's economic well-being. So I think if we can really seriously consider, like China Road and Bridge Corporation has done wonders in the past with their experience and their knowledge, and other such like companies, we should sit down and chart out a plan whereby both Chinese companies and Pakistani companies utilize each other's resources. We have our cheaper labor, as I said, and our skilled labor, semi-skilled labor, Chinese technology, Chinese machinery, and joint ventures. So we can send our delegation from Russia, Kai, and other industrial states to China, and we can have road shows over there and attract Chinese investors to come and invest in these places. So I think we should work on these lines, and we get your support and your advice in this behalf. And we would like to engage, like this company of yours, other companies, to provide expertise and experience to manage other new special economic zones in Pakistan. So that would be, I think, a very valuable contribution to further augment, the potential of Shakai and other potential places in KP and other parts of Pakistan. मुझे यहाँ पर आके बड़ी खुशी हुई, और मकसद ये था कि आपको encourage किया जाए कि और जो problems हैं अगर कोई हैं तो समझा जाए, उनको resolve किया जाए. तो आज की ये discussion बड़ी मुफीद है और fruitful है. इसको इंशाअल्लाह जो भी issues आपने raise किए हैं उसको हम फ़ौरन उसको discuss करेंगे, उनको resolve करेंगे. बाकी मैं आपकी यहाँ की management को यकीनन उनको मैं इनकरेज करूँगा और तहसीन पेश करूँगा, और आपको ये गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी करके जो भी टाइमलाइंस आपने तय की हैं, जो आपने जो मनसूबाबंदी की है, उसको उन टाइमलाइंस के मुताबिक अचीव करने के लिए आप पूरी कोशिश करें. उसके लिए हम एक वर्चुअल मीटिंग रखेंगे ताकि अगर कोई डिफ़िकल्टीज फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से है उसको रिमूव किया जाए, जहाँ पर आपकी तरफ से इश्यूज़ हैं वो आप उनको रिमूव करें, ताकि ये जो इंडस्ट्रियल स्टेट जो स्पेशल जोन है वो एक रोल मॉडल बने, और ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे अपना जो बैरूनी ममालिक में जो सरमायाकार हैं, चाहे वो एक्सपर्ट्स हैं या टर्क्स, चाइनीज़, मिडल ईस्ट के, गल्फ़ के जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, उनको अट्रैक्शन हो, वो समझे कि यहाँ पर जाएंगे तो बहुत हमें ज़बरदस्त पजीराई मिलेगी. तो इसको हम इन लाइंस पर हमें इन खतूत पर हमें इस्तफार करना चाहिए. उसके लिए मैं हाज़िर हूँ, और नॉट एज प्राइम मिनिस्टर बट CEO of Pakistan, I am there to support you all your good efforts. Thank you very much. बहुत शुक्रिया.